Now, when we talk about biological classification, हमारे धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो इतने सारे स्पीशीज है उनको ग्रुपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, राइट? तो जब हम इनको ग्रुप कर रहे हैं तो अलग अलग किंगडम में इसको हमने क्लासिफाई किया था। जब क्लासिफिकेशन का बात आता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया। जिनमें से सबसे पहला साइंटिस्ट जो था जिसने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन शुरू किया था, ही वाज नथिंग बट एरिस्टोटल। ही वाज नो वन बट एरिस्टोटल, नॉट नथिंग। वो एरिस्टोटल था जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, और वो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था। इसके पहले जो भी क्लासिफिकेशन थे वो यूजेस के बेसिस पे थे, which is nothing but food, clothing and shelter। ठीक है, इसके बेसिस पे था। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे टाइम आगे जाते गया तो वी हैड एरिस्टोटल हु गेव अस मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड्स consideration of simple morphological character. Based on that, the classification helped in grouping the organisms into two major groups, which is kingdom Plantae and kingdom Animalia. Plant kingdom was further classified based on their height, and thus they were identified as herbs, shrubs, and trees. Whereas animal kingdom was further classified based on presence or absence of red blood, and thus the animals were further bifurcated as red-blooded animal and non-red blooded animals. Such kind of classification further went on, and we had two kingdom classification, three kingdom classification, four, five, and six kingdom classification that has been done so far. Six kingdom classification is one of the most recent classification that has been done, which we'll be understanding further. Very firstly, the two kingdom classification, as we said, was done by Aristotle. Later on, it was done in a little bit more modified manner by Linnaeus in the 18th century. That was more refined, but then still we had two kingdom classification only, and this was based on observation of presence or absence of cell wall. If the cell wall was present, then that organism was grouped in Plantae. If the cell wall was absent, then they were grouped in kingdom Animalia. So kingdom Plantae thus include all plants, fungi, and bacteria, whereas kingdom Animalia included all animals as well as protozoans. Now, this was a very false way of classification because the kingdom included both unicellular as well as multicellular organism. As we can see in kingdom Plantae, we have unicellular as well as multicellular organisms. We had prokaryote and eukaryote in the same kingdom. We had autotroph and heterotroph in the same kingdom. We had photosynthetic and non-photosynthetic organisms present in the same kingdom. Because of all these drawbacks, this two kingdom classification was ruled out, and we went ahead for further, that is three kingdom classification. This three kingdom classification was given to us by a scientist called as Aristotle. Sorry. It was given to us by a scientist called as Ernest Haeckel. Okay, Ernest Haeckel was the scientist. Handwriting mein gadbad. Ernest Haeckel was the scientist who provided us with this particular method of classification. Okay, that is three kingdom classification. In this particular kingdom, in this particular classification kingdom, beta, we had a new kingdom coming up, which is kingdom Protista. इस kingdom में सारे unicellular eukaryotes were included. So that includes protozoa, bacteria, and fungi over here. Okay. However, this wasn't still a correct method because here the classification was not authentic. Thus, we went a little bit more ahead, and there was four kingdom classification which was done. The fourth kingdom was provided to us by Copeland. Is kingdom में we had bacteria which was pulled out from Protista and placed into
new kingdom, that is kingdom Monera. Fungi was pulled out from here and placed in kingdom Plantae again. This fungi still couldn't find a better place, and thus we had another, that is five kingdom classification, which was given to us by R.H. Whittaker in the year 1969, where now we have Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia present. This classification was based on five characteristic features, okay, which is reproduction, cell structure, phylogenetic relationship, mode of nutrition, and body organization. इसको याद रखने का इजी तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमारे पास आया सेल, जो एग्रीगेट होके बन गया बॉडी. अब बॉडी आया तो उससे न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, सो वी हैड न्यूट्रिशन, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन कमिंग अप. अब खाना पीना खाया है तो रिप्रोडक्शन करना भी बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है. जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है तो यू डेफिनेटली रिक्वायर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. This can be a simple way how you can memorize this particular sequence or this particular five observations that were made by R.H. Whittaker during the classification of organisms. This is the table of overview table of all the animals that belong to this particular kingdom classification. Later on, we also had six kingdom classification, which is not given over here. Chalo, let's do six kingdom classification. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल वूस, जिन्होंने सारे एनिमल्स को तीन डोमेन में क्लासिफाई किया, तीन बड़े बड़े डोमेन में क्लासिफाई किया बेटा. सबसे पहला डोमेन वॉज आर्के बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन वॉज यू बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन वॉज यूकैरिया. इस प्रकार से तीन डोमेन में सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्लासिफाई किया. ठीक है, आर्के बैक्टीरिया में आर्के बैक्टीरिया इंक्लूड हुए, यू बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया इंक्लूड हुए, और यूकैरिया के अंदर आगे वी हैड इंक्लूजन ऑफ प्लांट्स, दैट इज किंगडम प्लांटे, वी हैड किंगडम प्रोटिस्टा, वी हैड किंगडम फंगाई, एंड वी हैड किंगडम एनिमेलिया. यानी कि सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूकैरिया के अंदर आ गए थे, और मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. अब पॉइंट है कि इनका क्लासिफिकेशन किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था. तो इनका क्लासिफिकेशन काफी ऑथेंटिक रीसेंट है, ऑब्वियसली इसलिए ऑथेंटिक था बिकॉज इनका क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन 16S rRNA. ये याद रखना बेटा, हमें नीट में ये चीज आ सकता है. द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन 16S rRNA. However, इतना डिटेल हमको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट एनसीईआरटी डेफिनेटली स्पेसिफाइज अबाउट 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन टू अस. साइंटिस्ट का नाम एंड देयर बेसिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. ऑलराइट बेटा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 अलग अलग हमको किंगडम्स मिले हैं, ये किंगडम्स एग्जैक्टली किस प्रकार से डिवाइडेड है. सो जब किंगडम डिवीजन का बात करें तो धरती पे सबसे पहले मोनेरन्स आए थे, विच इज यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, which evolved to give us unicellular eukaryotes, which later on evolved to provide us with multicellular organisms being autotroph, decomposers, and heterotroph. Heterotroph are also identified to be as holozoic. Holozoic क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पूरा का पूरा खाना खा लेते हैं और बाद में अपने बॉडी में वो डाइजेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं holozoic. So Protista evolved हुआ into something called as holozoic. I hope the concept is clear so far बेटा.